Maximum students are absent today, ne? On examination पूजे पड़े खबर होइदिला पूजा ऑन एग्जामिनेशन कितने जगह में पढ़ती लेवल देखी 60 Jasmine, which place will you start? Unit 3, that much. Listen, students. Deparage, what is the meaning of examination? What is the meaning of examination? I have told you earlier. What is the meaning of examination? Listen, what is the meaning of examination? Son? The process or act of examining. Sit down. The process or act of examining is examination. So, Winston Churchill, who was he? Sonu? Winston Churchill, who was he? Divya. Sit down. That is slip of the tongue. Was the Prime Minister of England. So, students, you must be knowing about what is the autobiography of Churchill. You. A roving commission, my early life. A roving commission, my early life. So, students, what was the entrance examination to which Winston Churchill was selected? To which school? The entrance examination was conducted for which school? Who was the headmaster of Winston Churchill? Who was the headmaster of Winston Churchill? Dr. Walden. Who was the English teacher of Winston Churchill? Mr. Somerville. Okay, students, you have gone through nicely. Thanks a lot. Unit 3. I first went to Harrow in the summer term. Summer session. The school possessed the biggest swimming path I had ever seen. So far, Harrow is concerned, there was availability of a swimming pool in summer term, in summer session or summer season.
It was more like the bend of a river than a bath, and it had two bridges across it. जो स्विमिंग पूल थिला ता ऊपर दीटा ब्रिज थिला ब्रिज जो थिबो माने रिवर हो कि स्विमिंग पूल across रगिबो प्रीपोजिशन across it. Either means there we used to repair for hours at a time and pass between our dips eating enormous burns on the hot asphalt margin. It is extreme heat in summer. At that time we are preoccupied in swimming, in bathing by taking burns. Burn mane cakes, small cakes, balls. And asphalt margin, you must be knowing about chemistry. You are the excellent students of chemistry. What is the meaning of asphalt margin? Asphalt you must be knowing about. अरे पिचू जानिଛ ना नहीं पिचू पिचू को जेतले हमें बॉयल कर दो सेटा जो टेंपरेचर हुए मैक्सिमम लेवल रे सेटा गोटे हार्ड मेटल ता टोटली कोन हुए लिक्विड स्टेज को पळे आसे मोल्टन स्टेज को पळे आसे सिमिलर टू दैट ऑफ लार्वा जेतले हमें कोन करू ता सेटा कंक्रीट वा चिप्स पके देकरी रोलिंग करू से पूरा जॉइंट जो पका रास्ता गुडा कोन की तेणु जेतले एक्सट्रीम हीट हुए सेतले हमें प्रिफर करू कोन की बैथिंग करिवा पई कोठी स्विमिंग पूल रे किबा रिवर रे किंतु सेठी अवेलेबल थिला कोन गोटे बैथिंग प्लेस. Naturally, it was good job to come up behind some naked friends or even enemy and push him in. जेतेबेले स्विमिंग पूल पाकू किंबा बैथिंग प्लेस पाकू हमें जाऊ कुनी पिला माने टिके ड्रेस पिंधेबा अपेक्षा प्रिफर करंती विदाउट ड्रेस आ जे माने विदाउट ड्रेस आसंती ता संगे लागियो टी मजा लागे तेनु ये कोन कले जेतु स्टैंडर्ड 4 रो थिले गुड जॉब टू कम अप बिहाइंड सम नेकेड फ्रेंड्स जो माने टिके विदाउट ड्रेस रे अछंती ताका पछ पट आसी जिवे छिडा हेबे ता कोन करिवे ठेल देबे हम दिपारात्र टिके अभ्यास देखो छोटो बेलर एंड आई मेड ए क्विट हैबिट ऑफ दिस विथ बॉयज ऑफ माय ओन साइज और लेस हमें टिके मजा करू को टिके हम लेवल रो पिला मानक सहित तमे वर्तमान तमे प्लस 2 लेवल रो पिला मानक सहित जेम जोक करि परिबो फर्स्ट ईयर पिलांग सहित जोक करिवो ना प्लस 3 फर्स्ट ईयर पिलांग सहित जोक करि परिबो कि करि परिबोनी हमें सब बेले टिके सिमिलर एज रो थिले टिके फ्रेंडशिप टा कोन हुए बेसिकली सुप्रीम हुए. So students, one day when I had been no more than a month in the school, I saw a boy standing in a meditative posture, wrapped in a towel on the very brink. तेणु जानथबो विंस्टन चर्चिल केते तांकर चाइल्डिश एटीट्यूड थिला जेतबे से गोटे थर देखिले आई सॉ ए बॉय स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिंग पोस्चर पूरा ध्यान भग्न सहकारे छिडा आइची आ उयर करचे राफ्ट माने कोन करचे पिंदिची गोटे टावेल ऑन द ब्रिंक माने पूरा खसई कि तळ को पिंदिची. He was no bigger than I was. से मोठर एते बड़ नथिला. So I thought him fair game. तांका सहित टिके मजा करिबे खेलिबी. Coming stealthily behind, I pushed him in. तांका को लुचि लुचि आसिले एवं तांको ठेली देली. Holding on to his towel out of humanity. तांको ठेली देली किंतु टावेल टाको धरि नेली. So that it should not get wet. माने चर्चिल कर बहुत बुद्धि थिला. से पिलाटी के तो किंतु ता टावेल नथि. बहुत परोपकारी लोक. I was startled to see a furious face emerge from the foam. जेतेबेले से साबुन फेण गुडा बोलियाला बळे मुयर दिला केमि हठात गुडा फ्यूरियस माने भयंकर मुह करी से लोक कोन कला ना से पिला and being evidently of enormous strength making its way by fire strokes to the shore. से कोन कला पड़ी गेला सिना अंक देकरी कूळ को आसी पहुंचिला ए नष्ट to the shore कूळ रे. I played but in vain. मु तो उडीबा को आरंभ कली किंतु सक्सेस हेई पारली. Swift as the wind, my pursuer overtook me. जे मते फॉलो करूथिला आज यू जेला एठी कोन हेई जेला माने फिगर्स ऑफ स्पीच जो फिगर्स ऑफ स्पीच रे आज किबा लाइक थिबो तको हमें कोन करबा कंपैरिजन रे कोन कहबा सिमिली विदाउट रे मेटाफर. थैंक्स. So students seized me in ferocious grip and hauled me into the deepest part of the pool. तमे जेतेबेले जण को पानी के ठेल देइछ माने से गोटे गोटे तुमको धरिबो तो कोन कहबो कोन थैंक यू को छाड़ दबो तुमको टाणी टाणी के आनिबो भिडी के आनिबो हॉल्ड कोठी नबो इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल. से जो पूल टा अछि हमर वाटर रिजर्वर अछि से जगह को कोन करिवो टाणी के आनिबो एवं सेही बडे मध्ये घटिला पई ता पई विंस्टन चर्चिल को पई. I soon scrambled out of the other side and found myself surrounded by an agitated crowd of young boys. तम धरा जाऊ तुमर गोटे जूनियर फर्स्ट ईयर पिला तम सेकंड ईयर पिलांग भितर टिके बहुत यूनिटी बॉन्डेज आसी गलानी कारण कोन तमे माने वर्तन लाइकली माइंडेड हे गलेनी
फास्ट इयर पिला बर्तमान कौन कि सब आड़ मिसिक अच्छा ओडिशा बिहार पश्चिम बंग विभिन्न स्टेट भितर गोटे यूनिफिकेशन बंद होगा टाइम लगे धर जो तुम सेकेंड इयर पिला कौन गोटे एक्शन किए नहीं गला तुम सांगे सांगे न्यूटन को थर्ड लॉ इंप्लीमेंट कर एक्शन तेणुक ये कौन है जिते से पिलाटा को से टाणिक नहीं पानी भितर को से काले खसिक दौड़ी पलैब प्राण विकल समस्ते कौन कले से जो पिला को ठेलते तार सांग मैंने पूरा सराउंडिंग अबाउट पूरा घेरी गले देख यू आर इन फॉर इट दे सेड तुम एभली काम कर डू यू नो व्हाट यू हैव डन एभली काम करते तुम जानि परिछो इट्स आमरी ता ना कोन थिला आमरी थिला ही इज इन 6th टर्म से स्टैंडर्ड 6 रे पाठ पढुदिला तमे होछ स्टैंडर्ड 4 he is at least 2 years senior to you he is head of his house he is champion at gymnasium he has got his football colors these are the extraordinary quality of amri हेड ऑफ द घर से बहुत लीडरशिप निये सेमि जे देखिबा हम क्लास रे जो माने नियंति पिले मॉनिटरशिप करंती तमे माने जानिथिबो इंग्लिश मीडियम स्कूल रे जो हेड बॉय सिलेक्शन दा बहुत कॉम्प्लिकेटेड 6-7 जन 8 जन मॉनिटर को ऊपर जन हेड बॉय होबे हम क्लास भले मॉनिटर नुए हेड बॉय जे होबो समथिंग डिफरेंट स्कूल को मैनेज करिवो दरकार पड़ले प्रिंसिपल को सहित सब बेले तार कोन रहबो अटैचमेंट रहबो अच्छा आउ कोन ही इज चैंपियन एट जिम रे पूरा टॉप ला तम मान के भीतर किछि पिला भी जिम मध्ये जाउ छ मु जानि छि ही हैज गॉट इज फुटबॉल कलर्स फुटबॉल रे मध्ये किछि अवार्ड बा रिवार्ड पाइथिला चैंपियन हिसाब रे दे कंटिन्यू टू रिकाउंट हिज मेनी टाइटल्स टू फेम and reverence unto a let upon a awful retribution that would fall upon me समस्त कोन कले जो पिलाटा को आमरे की ठेली देतिले के ना विंस्टन चर्चिल तार भलो गुण गुडा गाई गिरी कहिले एवं ब्लेम कले कहा को विंस्टन चर्चिल की तुम जानि त एई भली क्वालिटी तार अछि से छोटो सिना टमाटर हाइट रे जणा पड़छि बट स्टिल देन वेरी एक्चुअली मेरिटोरियस so I was convulsed not only with terror but with the guilt of sacrilege मु खाली भयभीत आतंकित हली से कथा नुए मु मध्ये चाहिली केमिति कोन मोर क्षमा प्रार्थना करिनेबी ताको सहित मोर किछि जो रिट्रिब्यूशन हेइछि केमिति कोन ताको अपोलाइज करनेबी हाउ कुड आई टेल हिज रैंक when he was in a bath towel and so small गोटे पिलाटा गेडा हे पारे किंतु एते तार टैलेंट अछि बोली मु जानि नथिली जे गोटे छोटो टावल पिंदी कोन करछि ना बाथिंग पेकर अछि I determined to apologize immediately मु भाबिले टिके जाई इमीडिएटली कोन करबी अपोलोजाइज करबी इन द सेंस कोन ना मु क्षमा प्रार्थना करिने जीबी I approached the potents in a lively trepidation मु कोन कली टिके मो मन रे गोटे पूरा ट्रेपिडेशन माने कोन कंपन गोटे प्रकार मो मन रे किछि गोटे आलोडन सृष्टि हैला मु तापर जाई ता कहिली I am very sorry मु बहुत दुखित अछि I said I mistook you for a 4th term boy मु भूल रे तुमको भाबी नेली जे तुम बोधे स्टैंडर्ड 4 रे पढुचो you are so small तुम बहुत छोटो थिलो she did not seem at all placated by this so I added in a most brilliant recovery मु तणी करी गोटे प्लानिंग कली जे लोक सहित केमिति कोन सालिस करिवि तमे तम दोष त्रुटिटा को कहयो आरंभ करिवो जदि तमे किछि कहा पई एगेंस्ट किछि काम करिचो ता सहित किछि कंक्लूजन आनिबो समाधान करियको चाहिबो सेतेबेले तमरो मिसफॉल्ट टाको तमे कोन करिवो एक्चुअली रिवेल करिवो परिप्रकाश करिवो से कोन कहिले माय फादर हु इज ए ग्रेट मैन इज आल्सो ए स्मॉल से प्रथमे तांको कोन कले गोटे कमिट कले जे तमे छोटो थिलो मु जानि परलिनी पुनी कहिले मो बापा ताना के रांडो चर्चिल से मध्ये बहुत गेडा थिले किंतु एते बड़ गोटे पोस्ट रे थिले तमे निजुक निजे कोन करछन्ती कंप्रोमाइज करिया पई चाहुछन्ती सालिस करूछन्ती माय फादर हु इज ए ग्रेट मैन इज आल्सो स्मॉल एट दिस ही लाफ्ड या को से हसियो आरंभ कला किए and after some general remarks about my cheek and how I had better be careful in the future signified that the incident was past kon dekho pile mor jo thila actually at this he laughed eta कहला पर से हसियो आरंभ कला हमरे and after some general remarks about my cheek मोर जो दोष त्रुटि थिला मोर जो थिला एक्चुअली बैड बिहेवियर मिसबिहेवियर मोर जो थिला एक्चुअली हम ओडिया रे जोटा को अभद्रामी को लेको चिक की and how I had better be careful in the future मु केमिति कोन केयरफुल रहिबी ए बडी प्रकार आउट स्टेप कमिट करबे नाही इन नियर फ्यूचर
signified that the incident was closed. या पर मु भाबिली जे incident actually close हे गला. So students, unit 4. I have been fortunate to see a good deal more of him. In times when 3 years difference in age, it is not so important as it is at school. पिले 3 वर्ष गोटे डिफरेंस हे गला स्कूल रे सेटा हम गोटे किछि बड़ डिफरेंस लागु नथिला. We are afterwards to be cabinet callings for good many years. जेतेबेले आमरी कथा कंसीडर करा गला चर्चिल कहउचंदी मु जेतेबेले थिली कैबिनेट मिनिस्टर से मध्ये से बळी कैबिनेट मिनिस्टर रहिले से बळी जानथिबो ऑल ओवर रे जेते टॉपवर्ड यूनिवर्सिटी अछि ऑक्सफोर्ड कथा कुओ कैम्ब्रिज कथा कुओ हम जे देखिबो भलो भलो हमर विशेष करी जो माने अछंती थर्ड वर्ल्ड कंट्री रो प्रेसिडेंट किबा प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम होउचंदी से यूनिवर्सिटी रो स्टूडेंट कारण कोन सेठी पोटेंशियल सेठी किछि टैलेंट अछि ताकू बेस करी समस्त कोन करंती किछि ना किछि बिल्डअप होंती कैरियर जाको बेस करी वर्ल्ड ओवर रे सिग्निफिकेंट आनंती सेमते हारो स्कूल रे जो माने स्टूडेंट थिले पर्टिकुलरली तुमे देखो दी जण स्टूडेंट छोट बेले एभଳି थिले तांकर गोटा आर्टिकुलेशन थिला रिलेटिंग टू मिसचिविंग बिहेवियर किंतु जेतबे सीनियर मोस्ट हेले सेतबे दी जण जाक हेले कैबिनेट मिनिस्टर हे रिपोर्ट रहिले पर्टिकुलरली इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. So students, we were afterwards to be cabinet callings for a good many years. It was thought in progress that while I apparently stagnated in the lowest form, I should gain a prize open to the whole school for reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay's Age of Ancient Rome without making a single mistake. केते जण पिला माने मैथमेटिक्स रे नंबर 1 का टॉपर स्टूडेंट थिबे मैथमेटिक्स रे 100 आउट ऑफ 100 रखिबे किंतु इंग्लिश रे 60% रखि परन फिजिक्स रे 70% रखि परंती केमिस्ट्री रे 80% रखि परंती इट वुड बी द वेरिएशन ता माने 10th लेवल जे मैथ भलो करछि प्लस 2 रे फिजिक्स रे भलो न करिवो कि केमिस्ट्री भलो करिवो माने नाही खाली मैथ रे भलो करिवो सेमति कहि होबो तेनु एटी देखो चर्चिलकर गोटे ही कंडीशन थिला जेतेबे से एक्चुअली स्कूलिंग रे थिले reciting जोटा हमें आवृत्ति को कविता आवृत्ति 1200 lines of Macaulay's Age of Ancient Rome. Who was Macaulay? You must be knowing about. Who was Macaulay? Macaulay commission number बसतिला Macaulay की Lord Macaulay इंडिया रे इंग्लिश एजुकेशन इंप्लीमेंट हबो बोली फर्स्ट प्रपोजल देथिले लॉर्ड माकाउले एवं इंडिया रे प्रथम इंडियन जे कि अप्रोच करथिले इंग्लिश एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन हो से होजंती राजा राममोहन राय तेनु लॉर्ड माकाउले कमिशन बसितिला जाकु कह जाय माकाउले मिनिट आ तार मेन ऑब्जेक्ट होची इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया मार्कवेल एटा देछि Macaulay Macaulay commission Macaulay ओडिया रे लिखा हितेबो listen we must have to go through students if you have mobile phone just Macaulay minute mobile रे देखिलो Macaulay minute concept clear हो जाओ that may be देख लो आप देखिए मोबाइल
Right. Listen, students. So I also succeeded in passing the preliminary examination for the army, while still almost at the bottom of the school. Army selection तम मानक भितर कौन सी पिला मानकर at least aim और objective relating to Air Force और National Defence Academy सेमती किछि एम ऑब्जेक्ट अछि प्लस 2 साइंस करे किछि एस्पिरेंट थांती तेणु एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी तेणु पिले वर्तमान I also succeeded in passing the preliminary examination for the army while still almost at the bottom of the school on the basis of a selection mark selection में सिना बॉटम लेवल ले थिले किंतु टॉप थिले इंटरव्यू बोर्ड देखलो सेटा तो माकाउले listen. This examination seems to have called forth a very special effort on my part, for many boys far above me in the school held in it. So examination मो पई गोटे कोन देला प्ले stringent inspiration देला तमे माने आ घरे पर जेते बेले तमे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबो तम मानक भीतर गोटे क्यूरियोसिटी आसीबो मु विदाउट एंट्रेंस कोचिंग रे विदाउट प्रिपरेशन ने मोर ऑल ओवर केते रहिला जॉइंट एंट्रेंस रे कोन रैंक तापर देखिबो पिला माने तमे आउट टी कॉन्शियस हे जिवो आउट टी रैम्पटली प्रिपरेशन होबो कोन कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जोटा तम मानक पय बेनेडिक्शन ओन टाइप ऑफ बेनिफिट सो जेते बेले गोटे थरा तम सब्सिडी हे गेलो पिले तमे कहबो जे कोनसी गोटे प्रॉब्लम पिले बीट बाय बीट तुमरो जेते भी ट्राई कले होउनी कि जेते बेले तादरे सक्सीडेड हे गेलो देखिबो तम पय आ किछि आसीबोनी असुविधा गोटे प्रॉब्लम पर आ गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करि चलेबो यदि प्रथम प्रॉब्लम न होला तम मन को गोटे डाउट रहिला तापर आ से प्रॉब्लम पे चैप्टर उडा होबो Similarly, fashion students, I also had a piece of good luck. हाँ पिले, तमे जेते लेबर करा, प्लस 2 साइंस गोटे डायनामिक, एक्चुअली स्ट्रीम. भला कैरियर पिला, जो माने 10th लेवल ले 95-96% रखी थिबे, से मानकर दरकार पड़ले कंसिस्टेंसी अरे की इवन बेस्ट 7 पिला माने प्लस 2 साइंस रे सेकंड डिवीजन पाइछ. आउ बेस्ट 18 पिला आगे जो सिलेक्शन होतिला तादर 3rd डिवीजन पाने प्लस 2 साइंस रे. सेमती किछि कहि हबो न 10th मार्क बेस करिकि एठी भी देखिथिबो जो पिला माने हमरो ए वर्ष साइंस ना आर्ट्स रो अछि साइंस पिला माने थिले बहुत भी भलो भलो स्कोरिंग करथिले 95-96% जो माने कंसिस्टेंसी मेंटेन करिसंती आ सबुठरो बहुत क्रेडिटेबल कथा होछि प्लस 2 साइंस रे 90% रखिबा हमर बोधे नियर अबाउट रखिछि समथिंग डिफरेंट रहिछि डेसिमल रे रुद्र रो बहुत बढ़िया स्कोरिंग जो माने भी रखिबे साइंस रे 80% इट इज आल्सो वेरी क्रेडिटेबल जो माने 75 किबा 70% से माने भी मते क्रेडिटेबल साइंस रे एक्चुअली फर्स्ट डिवीजन पाइबा भी क्रेडिट we knew that among other questions we should be asked to draw from memory a map of some country or other पिले मु तमु कहि दिली तमे कोन पाठ पढले सेटा के चूज करिवेनी तमे केते स्कोरिंग कलो तमरो जो सर्टिफिकेट रे सेटा को केई गोटे लैंडमार्किंग इश्यू करिवेनी तमरो सिलेक्शन करा जिवो जनरल अवेयरनेस उपरे हमें जेतबेले विभिन्न प्रकार वेराइटी क्वेश्चन करे जिवो बहुत पिला थिबे जो माने कि बहुत फिकिल रहथबे पाठ पढा रे किंतु जनरल अवेयरनेस रे बहुत स्मार्ट एंड एक्चुअली स्मॉकल तेनु से पिला माने कोन करंती एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करंती धरा जो हमें एठी पाठ पढुचे समस्त मैट्रिक पास करिचे तमु जति कुआ जिवो ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया तमे को काई मोर कोन ज्योग्राफी अछि कि मु काई मैप ड्रॉ करी किंतु कॉमन सेंस बा हमर जनरल अवेयरनेस होची एटलीस्ट हमें ओडिसा रो मैप इंडिया रो मैप किबा जति विभिन्न कोनसी कंट्री रो प्री लोकेशन देखैबो जियोग्राफिकल लोकेशन ता बाबत हम किछि कॉमन आईडिया मध्य पिला रहिबा दरकार तेनु ताकर मध्य सेही भली गोटे सिलेक्शन आसिला देख पिले वी न्यू दैट among other questions we should be asked to draw from memory map of some country or other किछि कंट्री रो मैप को ड्रॉ करबा सेठी थिला ताकर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर the night before by way of a final preparation I put the names of all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand practice makes a man perfect तमे देखिबो पिले तुमर जो बायोलॉजी बा बॉटनी और जूलॉजी रे प्रैक्टिकल करा जाउची से प्रैक्टिकल ऊपर तुमर रेगुलर प्रैक्टिस दरकार न होबनी तमे
जो गुड़ा देखि आमर सर्जिकल रिलेटेड टू फ्रॉड्स सेटा भी गोटे जनरल कथा नुहे तुम सेटा अच्छी ना नहीं प्रैक्टिस कले आरंभ हम तेणु आम देखा पिले बेले बेले आमर कौन हुए नाइट बिफोर by way of a final preparation I put the name of all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand रो मैपिंग से कौन कले प्रैक्टिस करियो कि चाहिए कि ना चर्चिल I applied my good memory to the geography of that dominion से डोमिनियन से भूखंड रो कौन कली ना हमर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करबा को चाहिए and of the first question in the paper was draw a map of New Zealand पहले देखिनी बेले बेले तमे येबे तो समस्ते कोन करछ ऑल थ्रू प्रिपरेशन होउछ जेते बेले तमरो फॉर्म फिल अप सरला पर टिके तमे सिलेक्टिव रहिबो को चैप्टर रे टीचर माने तुमको कहबे अधिका टिके एम्फासिस जो मैक्सिमम क्वेश्चन आछी एमि तमे भाबियो गोटे गोटे पिला द्वारा जो कोन होई सिलेक्शन बेसिस रे पढी करी गला जेतिके प्रिपरेशन होई सेतिके सिलेक्टिवली पढी गला से लकी नै फॉर्चूनेट नै सेटा बेले बेले लक फेवर करी जाय तो चर्चिल कोन करे प्रैक्टिस करी के गले न्यूजीलैंड रे मैप लकीली सेटा आसी जाय क्वेश्चन sure enough the first question in the paper was draw a map of New Zealand this was what is called at Monte Carlo an N plane and I ought to have been paid 35 times by stage तेणु मु आकु कोन करतिली कम से कम 35 times प्रैक्टिस करी करी आस्तिली listen I certainly got paid very high marks for my paper यही पेपर ऊपर मु अधिका किछि मार्क पाई गली this is the last so students what is the gist of on examination try to speak from your memory what is the gist of on examination what the topic gave the gist if you say what you can validate yourself what is your thinking that on examination is a fine or aspiring chapter for the students since you are students almost all are valedictorian students what is your viewpoint relating to on examination written by Winston Churchill what is the moral behind it आपको पढ़िबा द्वारा हमहु गोटे कोन नैतिक कैरेक्टर आछि हम गोटे मोरल एजुकेशन पाई परछ तुम्हें जानी वर्ल्ड रो भल भल फिलोसोफर एमके गांधी कथा कह सुभाष चंद्र बोस को कथा कह कि एटी गोटे पॉलिटिशियन पॉलिटिकल फिगर होचन विंस्टन चर्चिल आम इंडिया रो प्रत्येक फिलोसोफर गोटे कहबो कंसीडर करबो एमके गांधी को कथा कि सुभाष चंद्र बोस को कथा तमे पिले कहिलो जदि तमे वर्तमान प्रॉपर्ली पाठ पढुछ तम रिजल्ट रो भल आसीबो बहुत पिला अछंदी प्रॉपर्ली पाठ पढु नांदी रिजल्ट भल आसुची तेणु भल आसबाटा आमर बेसी कहा ऊपर डिपेंड करूची तमे माने समस्त लेबर करूछ तमे माने कोन समस्त गारंटी देकेबे जे सर हम 100% जिते पिला सब 90% रखिबो एटा वेरी करिवो से वेरी करिपर हमर कहिबर उद्देश्य होची कोन आमे समस्त बापा मां पिला मान को भले से पढांती भले से ट्रीटमेंट करंती भले से केयरिंग भले से पाठ पढांती सब पिला माने कोन भलो होबे माने अछि तेणु आमे कहा को भलो कहबा आमे प्रकृति रे भलो केते बेले कहबा मु उदाहरण स्वरूप कहबी वर्तमान तुम हॉस्टल जियो ना कोन 81% रखी धन धन मैं आर्ट्स रो केते तो साइंस रे और हमर रुद्र कथा कंसीडर करा और कथा कंसीडर वर्तमान मु कहबी समस्त कहबे रुद्र अधिक परिश्रम करथिला और जदि मार्क 8% कमी ची तल हमें भी कहबा और भी मध्य परिश्रम करथिला किंतु जदि कंसीडर करे जीवो हमें कहा ऊपर बेसी कहार रिजल्ट ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दबा रुद्र तले कहलो मीन्स टा अधिक इंपोर्टेंट ना एंड अधिक इंपोर्टेंट
On examination is nothing but a moral lesson. Whatever may be your preparation. तमर प्रिपरेशन तुम 18 घंटा पढ़ो कि 8 घंटा पढ़ो कि 4 घंटा पढ़ो कि 2 घंटा पाठ पढ़ो किंतु परसेंटेज ऑफ मार्क जदि भलो सिक्योर कलो एवरीबॉडी विल अप्लाई यू तो ऑन एग्जामिनेशन इनिशिएशन रे तुम देखि नियो विंस्टन चर्चिल गोटे भलो स्टूडेंट नथिले भलो ताको रैंकिंग नथिला किंतु भाबि नियो इंग्लैंड रे ट्वाइस हेले प्राइम मिनिस्टर समथिंग क्रेडिटेबल और नॉट सेटा गोटे कथा हला आ गोटे हमें देखिले जे हमर पेन एंड पेपर जो एग्जामिनेशन स्कोरिंग बा मार्किंग सेटा जण कैरियर रो फाइनल सिलेक्शन में तम मानक भीतर 60% पिला रहिबे 80% पिला रहिबे 60% पिला माने जति के अचीवमेंट करिवे गोटे 80% पिला सेति के अचीवमेंट करियो बोली माने ना किबा गोटे 80% पिला एंट्रेंस रे जति के अचीवमेंट करिवो गोटे 60% पिला अचीव करियो बोली माने ना तण मन रख गोटे बहुत बढ़िया कोटेशन थिला विशेष कर तुम जानी थॉमस अल्वा एडिसन कौन इन्वेंट करथिले से कौन गोटे कोटेशन में कहिथिले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली जीनियस "99% perspiration and 1% inspiration is the other name of success." से इसमें कहा जाए थॉमस वैकिन कहले सक्सेस ऑलवेज सक्सीड्स तब जी जो लेवल रुह तुम फाइनल अचीवमेंट जदि टॉप हैला तुमको समस्त सब बड़े भलो बोले कंसीडर करिवो हमें जो माध्यम गुडा रही आकु कोन करबा प्रॉपर वे रे गाइड करबा एवं जदि फाइनल रिजोल्यूशन आसिला जदि हमें सक्सेसफुल हे गेले एवरीबॉडी विल बी काइंड एज वेल एज अप्राइजिंग टू अस अच्छा ऑन एग्जामिनेशन चैप्टर गला पिले हमर पोएट्री कोन पिले पढै थिले poetry किले हमर जो फर्स्ट पैसेज रही छी ऑन एग्जामिनेशन फोकस ऑन योर रिलेशन स्टूडेंट्स हमर जो फर्स्ट पैराग्राफ थिला परहाप्स थिला फर्स्ट पैराग्राफ कोन थिला I had scarcely passed my 12th birthday से पैराग्राफ टी देखिबा को चेष्टा कलो बिले से पैराग्राफ रो केतेटा क्वेश्चन खाली जस्ट लेखा What was the writer's impression? What was the writer's impression? What was the writer's impression on the examination? What was the writer's impression on the examinations? Second question, which subjects
were the writer's favorite? Which subjects were the writer's favorite? Second sir labile. Third question lekha. Which subjects were the favorite of the examiners? Which subjects were the favorite of the examiners? Fourth question. Why did not the writer do well in the examination? Why did not the writer do well in the examination? Next, students, when did the writer enter examination region? Enter examination region. How long did he stay there? How long did he stay there? These are 5 questions, very easy. Go through the paragraph and try to give the answers according to the questions asked. Sohan, perhaps yesterday you were burning the midnight oils. Isn't it? Perhaps you were burning the midnight oil. राति जांक बोधे अनिद्रा थिलो पाठ पढुथिलो नहीं से भलो साइंस पिला मानकर से अभ्यास रहिबा भलो किंतु फर्स्ट बॉडी देन स्टडी बॉडी के टिके रिलैक्स दवा दरकार से पूरा टायर्ड अछि एबे भी जदी सोई पडिबा और क्लास सरी करी पळेबे समते घर से उठिबनी मानु जे परिश्रम कर किंतु बॉडी भी टिके रेस्ट दरकार घंटा 2 घंटा रेस्ट नबो फ्रीली तापर क्लास अटेंड करे बहुत भल लागिबो हाउ स्टूडेंट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस and write down the answers so far as unit 1 is concerned. Unit 1, very easy questions. But first paragraph रे question draw करिछे केन हमर एग्जाम रे एक्चुअली पैराग्राफ आसे completed.
it ought to be, actually the answers ought to be grammatically rectified. Write in the sentences according to the paragraph. Don't try to maximize the answers. It ought to be within Rakshana Rekha. Rajesh is not available. Perhaps his arrival would be similar to the arrival of monsoon. He must be attending online classes. Completed. Completed. Smriti Ranjan, you are a good student. Still, then you are sitting silently. What is the reason? You are thinking about your friends. Why your friends are not coming? Oh, Sumit. No, actually, Sumit. But most of the time I call him as Smriti.
इले आमे बहुत गुडे बोधे डिक्टेट करथिले प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब नाही फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन निष्कर्षण अवेलेबल हेबेनी फिर भी कौन से पढ़ी थी वो हमरो ग्रुप अछि बा मंडे टू ट्यूसडे भितरे दिव्य दिव्य रचना so far as entrance examination is concerned poetry ऊपर बहुत किछि क्वेश्चन आसीबो नहीं नहीं से तुम बुक रे जो जो सब्जेक्ट ऊपर तांकर लाइटिंग थिला पोएट्री चैप्टर आमे कोन करूचे हमर इंग्लिश के गोटे देले कोन की लिटरेचर आ गोटे दोचे ग्रामर पोर्शन से जो लिटरेचर पोर्शन ता जो तादर आसी गला सब्जेक्ट गोटे कोन की पोएट्री आ गोटे रे प्रोज स्टोरी आसीबो नॉन डिटेल्ड आसीबो फ्रैगमेंटेशन रे तनु सेटा तमे जोटा कहू ना दैट इज द आंसर सो फार एज द टॉपिक इज कंसर्न टाइम है गलानी दिव्य दिव्य मोर प्रीपोजिशन 50 फ्रेजल वर्ब 50 को ट्यूसडे भीतर सेंड कर देबो ग्रुप पे सेटा तो प्रिपेयर्ड है जे 50 प्रीपोजिशन 50 फ्रेजल नहीं मु देई देबी सेंड करी जो गुडा नै थिबे देखिबा नेक्स्ट जेतले क्लास करिया ताकू डिस्कशन करिबा आज कोन अछि बोधे मैट्रिक्स रो एग्जाम ना से जो पिला मन को माइंड टिके डाइवर्ट होउछ हु इज द फादर ऑफ मैट्रिक्स हु इज द फादर ऑफ मैट्रिक्स आज्ञा जस्मिन जस्मिन हु इज द फादर ऑफ मैट्रिक्स सोहन कुमार हु इज द फादर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स जतले इंप्लीमेंटेशन हला को प्रिंसिपल रो इंप्लीमेंटेशन करा जाय छी मैथमेटिक्स रे हु इज द फादर ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव जतले इंप्लीमेंट हला ए डेरिवेटिव जतले इंप्लीमेंटेशन हला अलजेब्रा रो हे छी इंप्लीमेंटेशन ना ज्योमेट्री रो से फिलोसॉफी किए देई चंदी टेंजेंट रो फिलोसॉफी किए देई चंदी हु इज द फादर ऑफ टेंजेंट भला भला जो सेमिनार होची एंट्रेंस ओरिएंटेड अटेंड करो नले मो सहित कांटेक्ट रुआ मो सहित जीव मागणा मागणा बसिकरी किति सुनी करी 2-3 घंटा आसीबो कटक भुवनेश्वर रे 3टा इंस्टीट्यूट रहउछ जते बेले जे चाहिबो सर हमें टिके चाहू एंट्रेंस ओरिएंटेड कोडी दिया छै अपन जाउछंती की देन आई विल हेल्प यू मैट्रिक्स रे के अर्थर काले डेरिवेटिव रे के न्यूटन टेंजेंट रे के यूक्लिड्स न्यूटन आउरी अछि दुनिया तुम इंग्लिश पढु एटा पचरिया कथा नै आ पिले आसा हमर चैप्टर ना मु देखुछ ना किछि पिला मैथमेटिक्स सब मैट्रिक्स रे धरि के बसचंदी
भल भल किसी ना मु परमिशन दौची मैथ भल पढ़ इंग्लिश भल पढ़ फिजिक्स भल पढ़ जियोग्राफी सब पाठ पढ़ माने नहीं आम भाव साइंस पिला आर्ट्स पाठ पढ़ी सेमती नहीं सब सब्जेक्ट ओरिएंटेशन टिके डिस्टर्ब कर दीजिए वेरी नाइस Sentence complete ହେଲା ପରେ रिपोर्ट अच्छी
नाही separate ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଲେ next class ରେ ମତେ କହିବ pattern ଟା ସାର୍ discussion କରିବା ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି। ନବ କି ଏଟା କି ଦେଖିବ?